So hello guys, today we are discussing a new concept of Python, module. What is module in Python? आपने module many of the time सुना होगा Python में. Module का आप यूज भी करते होंगे लेकिन आप exactly जानते नहीं है कि module होता क्या है. तो module किसे कहते हैं मैं आज इस क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा टोटली, तो आपको इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा. A module is a file containing Python code, functions, classes, variables, and statements that can be reused in other Python programs. मॉड्यूल क्या होता है? जो एक प्रकार की फाइल ही होती है. जैसे आप फाइल क्रिएट करते हैं ना, उसे बोलते हैं यूजर डिफाइंड फाइल. जो हम क्रिएट करते हैं, जो यूजर के द्वारा क्रिएट की गई हो, जिसमें हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं, क्लासेस क्रिएट करते हैं, वेरिएबल्स एंड स्टेटमेंट्स एंड मैनी थिंग्स. तो उस क्लास को हम दूसरी क्लास में जब इंपोर्ट करते हैं ना, या उसके प्रोग्राम को यूज करते हैं, उससे बोलते हैं मॉड्यूल. तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे. और ये एक और डेफिनेशन, अ मॉड्यूल इज अ पाइथन फाइल डॉट पी वाई, जो भी हम फाइल क्रिएट करते हैं, दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइज एंड रीयूज कोड. ओके, हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में, रीयूज करने में कोड को. व्हाई शुड वी यूज मॉड्यूल? बिकॉज ऑफ रीयूज कोड and organize large project, avoid writing the same code repeatedly, and share functionality between programs. Functionalities को हम share करते हैं between all the programs. And now creating your own module. So now move to VS Code and understand through an example. Okay, now we are in VS Code and let's create file inside this. सबसे पहले हम एक calculator बनाते हैं. Let's create a calculator. I think calculator meaning is right. And py and create two functions over here. So create functions def add a comma b colon return a plus b, and next one subtract a comma b colon and return, it will return a minus b. So this is our class. Now we will convert this into a module. So this is also a module when we import this in another class. Demo.py, create this class and import right here our module, means our class. So module name is calculator. So import module or module name, this is our module name, means class name. Then use this inside this calculator dot add and 10 comma 5. So it will return us 15. So add function is perfectly working for this import. Okay, so we import this add function through this class, through this file. Okay. Now import subtract also. So calculator dot sub 10 comma 5. So it will minus 10 minus 5, so it will return 5. Okay, so this is correct answer. Now understand one more thing in module. Now we will discuss different ways to import module. How many ways to import modules? So let's try to understand through an example. Now we have to discuss different ways to import modules. So first we understand this, import entire module. How to import entire module? So import module math like this and use this print math.sqrt of 25. So it will find out square root of 25 through this module. So this is our built-in module math. So there are many type of n- built-in modules are available in Python library. Okay, so we use math.sqrt square root and now find out the output. So this is our output, 5.0 means 5. So square root of 25 is 5. Okay, that's fine. Now understand next way to use import. Import specific function of module. So how to do this? From math import sqrt. So print, now use only sqrt of 49. Okay, the square root of 49 is 7, so it will give us this output 7. Okay, so now use next way to find out next way to use module. Now we will try to understand import with alias. Alias का यूज कैसे करते हैं, ठीक. So from, okay sorry, import math as m. So this is our alias m.
Now print m dot square root of um, 81. So square root of 81, it will give us 9. So this is our output, and this is the way to use module as alias. Okay, so now import everything. Everything means from maths import for all. This is for everything, every function, every variables of this module. So print sqrt of 25. So it will give us our output 5. So this is our output. Now this is the way to okay, this is a way to import everything through this module. So friends, in next video we will discuss module versus package. Module और package में क्या difference होता है. So thanks for watching. Please like, share and subscribe if this video is helpful for you. We will meet in our upcoming video of Python development series. Okay, so this is our next topic.